everyone. So today we start with class 9 chapter 4 structure of an atom. So earlier we have studied about what is atom and molecules. So what is an atom? Atom is the building blocks of matter. So atom is the building block of matter. So it is the smallest unit of matter that is composed of three subatomic particles. कौन से तीन subatomic particles से बनता है? प्रोटॉन, the neutron and the electron. So what is an atom? Atom are the building blocks of matter which are smallest unit and are composed of three subatomic matters or particles which are proton, neutron and electron. So we will talk about the structure of atom. So there are many theories in structure of atom. One theory is the Thomson's model of an atom. Thomson's model of an atom, it says that, so this is the diagram. So these are the protons which are inside and the negative charged particles are electrons. So in a sphere of protons, this is a sphere. Thomson model of an atom, it says that there is a sphere in which protons and electrons are distributed. And the positively charged are equal to negatively charged particles. And atom is electrically neutral. So in a sphere of protons, electrons are distributed. ये एक स्फीयर है प्रोटॉन्स का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल होंगे नेगेटिव चार्ज के और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. ओके, सो दिस इज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. ही सेज दैट देयर इज अ स्फीयर in which protons and electrons are there, and protons in the sphere of protons, electrons are distributed. So these are positive charge and negative charge, they both are equal to each other. So atoms is electrically neutral. Second is theory about Rutherford's model of an atom. Second theory is Rutherford's model of an atom. So he made the diagram like this. There is a sphere. ये हो गया इसमें न्यूक्लियस. These are the electrons and this is the orbit. Okay. It says that there are alpha particles. इसमें होता है alpha particles which are positive charge. 2 positive charge होता है और 4 उसका mass होता है. Okay. So according to Rutherford's model of an atom, he says that the middle part is also called as nucleus. Side part is electrons and the shells which are formed are called as orbit. So he says that alpha particles, when fast moving, alpha particles are bombarded on very thin layer, gold foil. Following observations were made. He explained his theory with the help of gold foil. So he made the following observations, like कि first most of the alpha particles होते हैं
most of the alpha particles, ये pass through the straight line, pass through straight lines, okay, straight line से pass होते हैं gold foil में. Second, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. और deflect कहाँ से होते हैं? Small angles से. So 1 out of 12,000 जो particles होते हैं appear to rebound. appear होता है कैसे? rebound होने के लिए. So he made certain conclusions on this also, like we start with Bohr model of an atom. So it is a postulate which is given by Niels Bohr. He says that only orbits which are known as discrete orbits of any electron are allowed inside the atom. कोई भी ऑर्बिट होगा वो डिस्क्रीट ऑर्बिट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? वो अलाउड होगा इनसाइड द एटम. नेक्स्ट ही सेज दैट while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy. So he says that while revolving around the discrete orbits, the electrons, they do not radiate their energy. So these orbits, ये जो orbits होंगे उनको क्या कहेंगे? Are called as energy levels. ये orbits क्या होंगे? उसकी energy का level होंगे. Okay. Next, so these orbits are represented by K, L, M and N. These are the shells, okay, or by the numbers like 1, 2, 3 or 4. ये orbits क्या होंगे? रिप्रेजेंट होंगे अल्फाबेट से K, L, M और N से, या नंबर से 1, 2, 3 और 4. जैसे कि ये एक ऑर्बिट है, उसका इनसाइड दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है. तो ये जो अंदर का ऑर्बिट है ये पॉजिटिव है, इसको कहेंगे न्यूक्लियस. ओके. फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा दैट इज कॉल्ड एज के शेल, मतलब n इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज एल शेल जिसको कहेंगे n इज इक्वल टू 2. देन m n इक्वल्स टू 3 and outermost is the n number is equal to 4. Okay, so these are the orbits. Innermost orbit is called as nucleus. Other shells are called as K shell, L shell, M and N shell. Okay. Next, Bohr's model. This is about Bohr's model. Now we will talk about neutrons. What are neutrons? Okay, so neutrons, distribution of electrons को distribute करना in different orbits या shells में, orbits में या shells में, उसको क्या कहते हैं? ये किसने दिया था? given by Bohr and Barine. ओके. तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन्स. और ये दिया था बोर एंड बरी ने. ओके. इसके कुछ रूल्स होते हैं. लाइक रूल नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम number of electrons present in a shell is given by
है शेल का नंबर होता है. ओके, तो ये क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं शेल में वो किससे गिवन होता है 2n स्क्वायर से, मतलब n होता है शेल का नंबर. ओके, देन नेक्स्ट फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 क्या हुआ, k का शेल हुआ. ठीक है, तो 2 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज द एग्जांपल. देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल इज कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो अकोमोडेट होते हैं, दैट कैन बी accommodated in the outermost orbit. outermost orbit जो होता है उसमें accommodate होते हैं, वो होता है outermost 8. ओके, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated. इलेक्ट्रॉन जो है वो accommodate नहीं करते गिवन शेल में, in a given shell unless the inner shells are completely filled. तो ये क्या कहता है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होना इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स में, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन. ये बोर एंड बरी ने दिया था. इसके कुछ रूल्स है. रूल नंबर 1 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं शेल में उसको देते हैं किससे, d2n स्क्वायर से, जिसमें n होता है शेल का नंबर. जैसे एग्जांपल हुआ n इज इक्वल टू 1, तो एक k शेल हुआ, तो 2 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अकोमोडेट किए जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो होते हैं 8. नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट नहीं किए जाते किसी गिवन शेल में अनलेस इनर शेल जो है वो completely filled हुए, तो वो आता है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस. लाइक वैलेंसी, definition is valency. There is a term name as valency. तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom is called valency. Next term is atomic number. Atomic number is equal to number of protons. Number of protons. And next is the mass number. This is 1, this is 2 and this is 3. तो mass number क्या होता है, it is equal to sum of protons and neutrons. Okay, so valency, atomic number and the mass number. What is valency? Valency is the combining capacity of any atom. Second, what is atomic number? Atomic number is equal to the number of protons. And third, what is mass number? Mass number are equal to the sum of protons and neutrons. Okay, like this. Okay, so this is the diagram. इसमें ये जो पार्ट है, this part, this is shaded black part plus another part is equal to the mass number. Okay, next, isotopes. Isotopes. So what are isotopes? Isotopes are the atoms of the same element with same atomic number
number but a different mass number. Different mass number. So isotopes क्या होते हैं? Atoms होते हैं same element के जिसका same atomic number होता है but different mass number होता है. Applications of isotopes. So we have talked about what are isotopes. Now the application of isotopes. Isotopes कहाँ use होते हैं? So first is an isotope is used in. Isotope कहाँ use होता है? In uranium. यूरेनियम में यूज होता है एज फ्यूल, फ्यूल की जैसे. नंबर 2, एन आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट से होता है. एंड थर्ड, आयोडीन में यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. गॉइटर के ट्रीटमेंट में आयोडीन से यूज होता है. ओके, गॉइटर. So these are the 3 applications of isotopes. Okay, now isobars. What are isobars? Isobars क्या होते हैं? Isobars atoms होते हैं different elements के with same mass number. The application of isotopes. Isotope is used in uranium as a fuel. Second, it is used in treatment of cancer. Third, it is used with the help of iodine in the treatment of goiter. Then isobars. What are isobars? Isobars are the atoms of different elements with same mass number but different atomic numbers. इसका mass number same होता है but atomic number different होता है. Example हुआ कैल्शियम. तो कैल्शियम का atomic number होता है 20. Argon, next example is 18. तो number of protons क्या होते हैं इन atoms में? different होते हैं mass number से both के. तो क्या होगा 40. Like this 18 protons और इसका number होता है mass का 22. न्यूट्रॉन तो क्या बन गया 18 इलेक्ट्रॉन्स. 18 प्रोटॉन इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कितना हुआ ये 40/18 एर्गॉन. ओके, so this is all about this chapter. If you like the video, please like, share and comment the video. Thank you so much.